Question 5c. Determine all the positive values of x for which the series 1 upon 1 into 2 into 3 plus x upon 4 into 5 into 6 plus x square upon 7 into 8 into 9 plus so on converges. अब ये सम में हमें क्या करना है, हमें ये सम में x की वैल्यू फाइंड करनी है, जिसके लिए क्या है, ये सीरीज क्या होनी चाहिए, कन्वर्जेंट. ओके, लेकिन हमें x की कौन सी वैल्यू फाइंड करनी है, ओनली पॉजिटिव वैल्यू. तो पहले हम डिस्कस करेंगे कि ये सम सॉल्व करने के लिए हम स्टेप बाय स्टेप कैसे जाएंगे. तो फर्स्ट वन, पहले तो हमें क्या करना है, ये सीरीज का हमें जनरल फॉर्म निकालना है. ओके, सो फर्स्ट फाइंड जनरल फॉर्म इन टर्म्स ऑफ n. सेकंड, यहां पे हमें क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है. ओके, फॉर विच द गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट. तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे, यूजिंग द रेशियो टेस्ट. ओके, अब रेशियो टेस्ट क्या है, पहले वो हम देखते हैं. तो रेशियो टेस्ट में हम लिमिट L फाइंड करते हैं. L इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी मॉड an प्लस 1 अपॉन मॉड an. ओके, नाउ व्हाट इज द कंडीशन फॉर रेशियो टेस्ट. इफ L is less than 1, then what we conclude, the given series is convergent series. If L is greater than 1, then the given series is divergent series. And if L equal to 1, then we cannot find any conclusion using this test. Okay, means for L equal to 1, the test is failed. तो हमारे सम में हमें क्या चाहिए, the value of x for which the series is convergent. Okay, तो हम यहाँ पे L लेस देन 1 ये कंडीशन यूज करेंगे. गॉट इट. सो नाउ लेट्स स्टार्ट. फॉर दिस सीरीज, फर्स्ट फाइंड जनरल फॉर्म. ओके, सो द सीरीज इज डिनोटेड बाय an. Here n is vary from 0 to infinity. Here what is given, 1. 1 means x raised to 0, x raised to 0, x raised to 1, x square and so on. So in numerator write x raised to n. Now in denominator value is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and so on. Okay, so here write 3n plus 1, 3n plus 2, 3n plus 3. Now let's check for n equal to 0. Okay, 0, 0, 0. So we get 1 into 2 into 3. Okay, now put n equal to 1. Here n equal to 1. So 3 plus 1, 4. 4. Here 3 plus 2, 5. 3 plus 3, 6. Okay, now put n equal to 2. So 3 2s are 6. 6 plus 1, 7. Here 6 plus 2, 8. And here 6 plus 3, 9. Okay, and so on. So this is the general form for this given series. Now, as per the ratio test, what we need an and an plus 1. Okay, so here what is the an? An is nth number of term of the series. Okay, so an is x raised to n upon 3n plus 1, 3n plus 2 and 3n plus 3. Okay, this is the nth number of term. Now find n plus 1th number of term. Okay, so in this term n is replaced by what? N plus 1. So what we get?
an plus 1 is x raised to n plus 1. Now see here. Here n is replaced by n plus 1. So what we get? 3n plus 3. So in general we have 3n plus 4. Here again n is replaced by n plus 1. Okay, so 3n plus 3, 3 plus 2, 5. So next is 3n plus 5. Okay, and here what we get? 3n plus 6. So now we have an term and an plus 1 term. Put these two values in this limit L. Okay. Now find L. So L is equal to limit n tends to infinity mod an plus 1 upon an. Now put the value of an and an plus 1. An plus 1 is x raised to n plus 1 upon this value. 3n plus 4, 3n plus 5, 3n plus 6. Okay, so right here. Now this an, this term is divided by an. Okay, so an is what? X raised to n upon 3n plus 1, 3n plus 2 and 3n plus 3. Okay. Now simplify this limit. First combine the value of x. So x raised to n plus 1 is nothing but x raised to n into x upon x raised to n. Okay. Into now n value, this term shift in numerator. Okay, so we get 3n plus 1, 3n plus 2, 3n plus 3. And this term is in denominator. So 3n plus 4, 3n plus 5 and 3n plus 6. Okay. Now next, here x raised to n is cancel out. Again x is free from n, so that's why take here free from n. So mod x into limit n tends to infinity. Now here all are positive value. Okay, so that's why हम इसको एब्सोल्यूट वैल्यू से क्या कर सकते हैं? फ्री कर सकते हैं. नाउ फ्रॉम हियर टेक n कॉमन. ओके, ये तीनों टर्म में से क्या लेना है? n कॉमन. सो n रेज टू 3 इज कॉमन. ओके, 3 प्लस 1 अपॉन n. सेकंड टर्म इज 3 प्लस 2 अपॉन n. Next is 3 plus 3 upon n. Same way in denominator, again take n raised to 3 common. Take n common from here and from here. Okay, so we have 3n, so n raised to 3. Now 3 plus 4 upon n, 3 plus 5 upon n, 3 plus 6 upon n. Okay, now this n is cancel out. Also apply limit n tends to infinity. So what we get? Mod x. Here this value 0, this value 0,
this value 0. Again this value 0, this value 0, this value 0. So what we have? 3 into 3 into 3. Again in denominator 3 into 3 into 3. Okay, so what we get? All 3's are cancel out. So we get answer mod x. Okay. Now as per the discussion of ratio test, what is the condition for convergence? Condition of convergence is L is less than 1. Okay, so here what we get? L equal to mod x, but for convergent what we need? Less than 1. Okay, so this is the condition of convergence. So what is the value of x? X is lie in a range -1, less than 0, less than 1. Okay, so this is the range of the x. But in question what is given? We are interested to find only positive value of x. Okay, तो हमें क्या लेना है? नेगेटिव वैल्यू कंसिडर नहीं करना है. सो व्हाट इज द एक्स? सॉरी, हियर एक्स. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? एक्स इज लेस देन 1. ओके, मीन्स 0 लेस देन एक्स लेस देन 1. हमें यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू इंक्लूड नहीं करना है. सो व्हाट इज द रेंज ऑफ एक्स? 0 लेस देन एक्स लेस देन 1. ओके, मतलब कि ये रेंज में क्या है? सीरीज कन्वर्जेंट है. ओके, मतलब कि now next step, this given series is convergent for 0 less than x less than 1. okay, now next step, अब हमें क्या करना है? एंड पॉइंट पे सीरीज का कन्वर्जेंस चेक करना है. मतलब कि x इक्वल टू 0 के लिए सीरीज कन्वर्जेंट है या नहीं, एज वेल एज x इक्वल टू 1 के लिए सीरीज कन्वर्जेंट है या नहीं. ओके, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? पुट फर्स्ट 0 वैल्यू इन दिस सीरीज. तो अगर x 0 हो जाएगा देन दिस सीरीज बिकम 0. ओके, तो हम यहाँ पे x इक्वल टू 0 के लिए क्या करेंगे? चेक नहीं करेंगे. ओके, नाउ फॉर सेकंड वन, लेट्स चेक फॉर x इक्वल टू 1. तो इसके लिए हमें क्या करना है? पुट x इक्वल टू 1 इन दिस सीरीज. ओके, so what is the series? Series an become now put x equal to 1 here. So for x equal to 1, the an series is this one. Now the question is that find the convergence of this series. Okay, here from denominator we can take n common. सही है, तो यहाँ पे हम कौन सा टेस्ट यूज करेंगे? लिमिट कंपैरिजन टेस्ट. ओके, चलो, तो अब ये सीरीज का हम कन्वर्जेंस फाइंड करेंगे. सीरीज दिस an is a given series. For this given series find new series bn. ओके, तो सीरीज bn हम कैसे फाइंड करेंगे? सो कंपेयर विथ an series. In an series, in numerator, what is the maximum power of n? Here 1 means n raised to 0. Okay, so maximum power of n is what? N raised to 0. In denominator, what is the maximum power of n? N is 1, 2 and 3. So total power of n is what? N raised to 3. Okay, so maximum power of n is 3. Okay, so now simplify this. So n raised to 0 is 1, 1 upon n raised to 3. Okay, so this one is the bn series. तो an series के लिए हमने क्या किया? एक bn series find की. Now let's apply the limit comparison test. So what is the limit comparison test? In this, find the limit. Limit n tends to infinity, an upon bn. Now an is what?
1 upon 3n plus 1, 3n plus 2 and 3n plus 3. Now this one is divided by bn. So bn is what? 1 upon n raised to 3. Okay. Now evaluate this limit. So n raised to 3 is now in numerator. From denominator, what we get? 3n plus 1 So now n tends to infinity is given, so that's why try to convert it into 1 upon n form. Okay. So here in numerator n raised to 3. From denominator, here take n common from first value. So we get 3 plus 1 upon n. Again from here take n common, so become n square. Okay. Here we have 3 plus 2 upon n. Again from here take n common, so here what we have? N raised to 3. 3 plus 3 upon n. Okay. Now these n raised to 3 is cancel out. Also, after applying limit, this quantity becomes 0, this becomes 0 and this becomes 0. So what is the answer? 1 upon 3 into 3 into 3, 1 upon 27. Okay. So this one is what? This one is finite value. And again this one is not equal to 0. Okay. So from comparison test, what we conclude? This limiting value is finite and non-zero. Okay. So that's why we conclude that series AN and series BN both converge or diverge together. अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, अगर सीरीज बी एन कन्वर्जेंट है तो सीरीज ए एन भी क्या होगी? कन्वर्जेंट. ओके. एंड अगर सीरीज बी एन डाइवर्जेंट है तो सीरीज ए एन भी क्या होगी? डाइवर्जेंट. ओके. सो नाउ नेक्स्ट लेट्स फाइंड द कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज बी एन. ओके. तो हमारे पास सीरीज बी एन क्या है? सीरीज बी एन इज व्हाट? सीरीज 1 upon n raised to 3. Okay. So now let's find the convergence of series Bn. So now this one is what? This one is a P series. Say yes or no? P series का फॉर्म क्या है? What is the form of P series? 1 upon n raised to P. Okay. So compare with this. This one is a P series with P equal to 3. Okay. Now what is the condition for P series? If P is greater than 1, then what we conclude? The given series is convergent series. Okay. तो अब यहाँ पे P क्या है? 3 and 3 is greater than 1. Okay. So that's why what we conclude? Series Bn is convergent. मतलब कि हमारे पास Bn सीरीज का कन्वर्जेंट आ गया. अब लिमिट कंपैरिजन टेस्ट से हमने क्या प्रूव किया? अभी हियर सीरीज An and series Bn both converge or diverge together.
ओके, मतलब कि अगर बी एन कन्वर्जेंट है तो ए एन बी कन्वर्जेंट होगी। सही है, तो हमने यहाँ पे क्या प्रूव किया पी सीरीज से कि बी एन सीरीज कन्वर्जेंट है। ओके, सो दैट्स वाई व्हाट वी कंक्लूड फ्रॉम लिमिट कंपैरिजन टेस्ट series AN also converges. Okay, मतलब कि हमने यहां पे क्या देखा, फॉर x equal to 1 the series is what, convergent series. Okay, so now what is the positive value of x for which the given series is convergent? 1 is included. Okay, so that's why 0 less than x less than or equal to 1. For this value of x, the given series is what, convergent series. Okay, this one is a solution of entire sum. This one is a solution of entire sum.